Hi guys, welcome to the yet another form filling video of Pratham Test Prep. My name is Nikhil. This video we are shooting to help you in filling up the form for MHCET application form 2022 for those students who wants to apply for law program. Guys, आपको पता होगा कि law अगर आप law aspirants हैं तो इसके अलावा काफ़ी सारी application form release हो चुके हैं. If I list down CLAT, AILET, IP University, Symbiosis, Christ, NMIMS, ये सारे फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं. ओपी जिंदल एंड देयर आर मेनी मोर यूनिवर्सिटीज हु हैव रिलीज देयर एप्लीकेशन फॉर्म. अगर आपने कोई भी फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है, आई वुड रिकमेंड यू कि आप फॉर्म को टाइम से फिल कर लीजिए, बिकॉज वी डोंट नो कि कब फॉर्म हाथ से निकल जाएगा. बिकॉज बहुत सारे टाइम्स ऐसा होता है कि आप अपने प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स में बिजी रहते हैं एंड आप लेटर ऑन यू रियलाइज़ कि आपका फॉर्म्स पेंडिंग था एंड डेट जा चुकी है. तो बेटर इन दैट कि आपको जब भी कोई फॉर्म फिलिंग वीडियोस मिलती हैं आप उसको टाइम से फिल कर लीजिए, बिकॉज आप अभी अपने प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स में बिजी होंगे. ऑलराइट, सो अगर आपको हेल्प चाहिए हमारी, सो यू कैन गो टू द यूट्यूब चैनल और प्रथम टेस्ट प्रेप. उसमें सारी फॉर्म फिलिंग वीडियोस अपलोडेड हैं. जो भी फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं इंपॉर्टेंट फॉर्म्स, सबके वीडियोस हमने रिकॉर्ड करके अपलोड किए हुए हैं. यू कैन रेफर टू दोज वीडियोस एंड यू कैन take our help in filling up the forms. Those who are actually a part of Pratham Test Prep, students of Pratham Test Prep, they can go to the Pratham Pratham portal, and in the portal you have an option called forms update sections. Forms update sections में सारी videos आपको वहाँ पर मिल जाएंगी and you can refer to those videos and fill up the forms. Alright, what we're going to do in this video, we'll talk about MHCET, कितने एप्लीकेशन उस फॉर्म को किस तरीके से फिल किया जाता है, कहाँ कहाँ पर स्टूडेंट्स नॉर्मली प्रॉब्लम फेस करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कौन से जगह पे हमको ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना होता है, और इसका रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है. रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स विल बी टॉकिंग अबाउट MHCET. ऑलराइट, सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, बिकॉज कुछ रिजर्वेशंस होते हैं MHCET के अंदर टाइप ABCDE. ये पांचों पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा बिकॉज ये रिजर्वेशन है फॉर महाराष्ट्रियन कैंडिडेट्स, बट एक एक करके मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा. अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते हैं, देयर विल बी एन ऑप्शन फॉर यू विच इज़ कॉल्ड OMS, विच इज़ आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट. सो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन के महाराष्ट्रियंस के लिए 85% कोटा इज़ रिजर्व्ड फॉर MHCET लॉ कॉलेजेस. बट लेट मी टेल यू कि कॉलेजेस MHCET के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं एंड बहुत सारी सीट्स हैं. तो नंबर ऑफ सीट्स आर नॉट लेस, इवन इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र. उसके अलावा भी बहुत सारी सीट्स हैं, सो इट विल बी अ गुड ऑप्शन टू फिल अप MHCET. Alright, so I'll be talking about the type A, B, C, D, E, कौन कौन से टाइप हैं फॉर रिजर्वेशंस. ओके, तो जो भी मैं अभी डिस्कशन करने वाला हूँ, दिस इज फॉर महाराष्ट्रंस. ओके, सो टाइप ए विल बी दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना 10th एंड 12th कंप्लीट किया है महाराष्ट्र से. उसके अलावा आपके पास डोमिसाइल, योर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र एंड यू बोर्न एंड बॉट अप इन महाराष्ट्र. सो दिस इज द टाइप ए कैटेगरी. ओके, सो टाइप बी कैटेगरी विल बी दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ टाइप ए, बट उनके फादर या मदर के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का, और दे आर अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट. सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज टाइप बी. ओके, टाइप सी में स्टूडेंट्स वो होंगे जो टाइप ए एंड बी से बिलोंग नहीं करते हैं, बट देयर मदर और फादर इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज वर्किंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बट वो पोस्टिंग होने चाहिए उस टाइम पर महाराष्ट्र में. अगर आपके ये कैटेगरी है, सो आप उसको टाइप सी के अंदर मेंशन करेंगे. ऑलराइट, सो टाइप डी के अंदर दो स्टूडेंट्स आएंगे जो कि ABC के अंदर फॉल नहीं करते हैं, बट मदर और फादर आर रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑफ इंडिया. सो अगर आपके फादर और मदर रिटायर्ड हैं फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं और अंडरटेकिंग से रिटायर हुआ है, सो यू विल कंसिडर इन टाइप डी. टाइप ई स्टूडेंट्स वो होंगे जो कि आपने अपनी 10th एंड 12th कंप्लीट किया हुआ है फ्रॉम महाराष्ट्र. देयर आर सम लोकेशन विच वाज अ डिस्प्यूटेड प्लेस ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटक. अगर आप उस पर्टिकुलर एरिया से हैं तो आप अपने आप को टाइप ई के अंदर कैंडिडेट के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं. बट वन मोर ऑप्शन इज देयर, उसके अंदर आपको आपका मदर टंग जो होता है वो महाराष्ट्र होना चाहिए. Alright, so type A, B, C, D, E for all the students who are from Maharashtra. इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र के पार्ट नहीं है, I'll tell you what all option you will be selecting later on. जैसे ही हम फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में जाएंगे, I'll show you कि महाराष्ट्र से नहीं है तो आप कौन से ऑप्शन को आप चूज करेंगे. Alright, so next thing I'll be talking about MHCET का रिजर्वेशन कैटेगरीज. Alright, this is important.
As I've already told you, 85% quota goes to the Maharashtrian candidates, Maharashtrian government candidates. So अगर आप Maharashtrian हैं, so 85% quota goes to the students who are from Maharashtra. Okay, out of that, उसके अलावा 10% is reserved for other candidates across India. जो आप महाराष्ट्र के पार्ट महाराष्ट्र में नहीं है, अगर आप अक्रॉस इंडिया अगर आप महाराष्ट्र में नहीं है, तो बाकी स्टूडेंट्स जो हैं 10% आर रिजर्व फॉर दो स्टूडेंट्स, अदर स्टूडेंट्स आउटसाइड महाराष्ट्र. ऑलराइट, अगर आप NRI, OCI, PIO कैटेगरी से हैं, तो 5% सीट्स आर रिजर्व फॉर दोज कैंडिडेट्स टू. So 5% percentage for NRI, OCI, PIO category, 85% for the Maharashtrian candidate, 10% for other students outside Maharashtra. All right, so these are the MHCET law reservation category. Now I'll be talking about a few colleges of MHCET, guys. These are few 5 good colleges of MHCET. इसके अलावा भी बहुत सारे colleges हैं जो कि MHCET के अंदर fall करते हैं, but I've given you the top colleges of MHCET. Okay, so the first college is very common, which is Government Law College, Mumbai, which is very common. Everyone knows about it. That is the first priority for a lot of students in Maharashtra. Indian Society Law College, which is in Pune. The third option is Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathawada University, which is in Aurangabad. Dr. Ambedkar College of Law, which is in Mumbai, and Saint Wilfred College of Law, which is in Mumbai. So most of the colleges are in Mumbai. Many of the colleges are in Mumbai and Pune and Aurangabad too. So these are the 5 top colleges of Maharashtra जो आप अप्लाई कर सकते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, गाइज. अगर आप महाराष्ट्र के पार्ट नहीं हैं, देन ऑल्सो इट इज़ गुड ऑप्शन टू गो फॉर, बिकॉज कॉलेजेस बहुत सारे हैं. दीज आर जस्ट few 5 colleges which I've talked about. इसके अलावा भी बहुत सारे colleges हैं, बहुत सारी सीट्स हैं MHCET के अंदर. So I would recommend you कि आप फॉर्म को फिल कीजिए. Alright, let's just go ahead and talk about other information about MHCET. Courses offered are BBA LLB, BA LLB, BLS LLB. BLS LLB क्या होता है? BLLB, BBA LLB, we are aware of it. BLS is Bachelor of Legal Science and Bachelor of Law. So this is the third sections which is also offered in MHCET. Eligibility criteria क्या है? अगर आपने 45% अगर आपने aggregate लेकर आए हैं 12th में minimum, that is the minimum criteria to get into to apply for the MHCET application forms. एक particular criteria दिया हुआ है. अगर आप ये particular section देखेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन इंडिया जो कि अपने एजुकेशन को बीच में स्टॉप कर देते हैं, 5th 6th में स्टॉप कर देते हैं, एंड दे गो फॉर ओपन यूनिवर्सिटी, SOL से, कॉरस्पॉन्डेंस से, दे कंप्लीट देयर 10th एंड 12th एंड दे अप्लाई फॉर कॉलेजेस. सो फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी एजुकेशन बीच में ड्रॉप कर दी थी एंड दे हैव गॉन फॉर 10th एंड 12th फ्रॉम द ओपन कॉलेजेस एंड ऑल, these students will not be allowed for this particular form. Alright, so selection criteria क्या होगा MHCET का? You'll be appearing for the entrance test which is conducted by MHCET entrance test. So आप उस particular test को appear करेंगे and test के basis पर आपका जो भी merit आएगा उसके basis पर you'll get the seat in MHCET colleges. Alright. Going ahead, talking about online application form that was started on 19th March 2022. The last date to fill up the form is 7th April 2022. Guys, it is very important. Please note that the days which we are getting, that is not मच डेट. सो बहुत कम टाइम हमको मिला है फॉर्म फिल करने के लिए. जैसे ही आपको फॉर्म फिलिंग वीडियोस मिलती हैं, प्लीज़ गो एड एंड फिल अप दैट फॉर्म, बिकॉज एक्चुअली 7th अप्रैल को फॉर्म की लास्ट डेट हो जाएगी. सो प्लीज़ फिल अप द फॉर्म ऑन टाइम. Alright, exam date is 17th and 18th May. Online, that will be an online test. So आपके पास एडमिट कार्ड आ जाता है जैसे कि आपका जैसे ही आपका एग्जाम होता है. जैसे फॉर एग्जांपल you have an exam on 17th, by 15th you can expect the admit card from the university and then you can appear for the online test. Alright, we have given the form link, direct link. This is the form direct link. Once I click on it, I'll be able to get to the registration page. The application fees is 800 rupees for the general and EWS category, 600 rupees for OBC, SC and ST categories. All right, so let me take you through the process of filling up the form. Let me click on this link. So we have got the main registration page of MHCET. Guys, we have filled the dummy information here. So please see के क्या क्या information आपको fill करना होता है. So I have mentioned the candidate full name, father name. On the right hand side, I will have to mention the mother name. Gender you have to select. You have to confirm the same gender on the right hand side. On the left hand side, you have to punch in the date of birth, and then on the right hand side, you'll have to punch in the religion. You belong to which place? I have selected urban city.
mother tongue you have to mention here, and in nationality. So I have punching those information. Once I go ahead, below that I will get this information. I will have to put in my address. I have punched in my whole address here. So address के साथ आपको state, district, pin code number and phone number भी आपको mention करना होगा. तालुका and village. Okay, there are a lot of locations जहाँ पर तालुका and village होता है. So आप अगर है आपका तो आप यहाँ पर mention कर सकते हैं. अगर आपका कोई तालुका या village नहीं है, you can keep that blank and you can keep it not applicable and you can proceed with the other information. Alright. Below that, I will have to punch in the mobile number and my email ID. Once I do that, I will have the option where it will ask me the correspondent address and permanent address same hai ki nahi hai. If it is same, I will click on yes. If I say no, I will have to separately mention the permanent address too. Okay, so I have selected yes and I will go to the लो पेज के अंदर मेरे पास ऑप्शन आएगा जहाँ पर मुझे अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा. ओके, सो पासवर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. अगर आप पासवर्ड का एक क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है, पासवर्ड मस्ट बी फ्रॉम 8 to 13 कैरेक्टर्स. आपके पास एक अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए. उसके अलावा आपके पास एक नंबर भी उसको मेंशन होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए आउट ऑफ दी स्पेशल कैरेक्टर्स. ऑलराइट, सो इस तरीके का आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा. अगर आपको नहीं पता, अगर आपका बार बार फेल हो रहा है पासवर्ड क्रिएट होने में, द बेस्ट वे टू कीप इट इज़ कीप योर नेम @123. ईजी टू रिमेंबर, ईजी टू डू इट एंड बहुत ईजी रहेगा समझना है. फर्स्ट लेटर को आप कैपिटल लेटर्स कर दीजिए, बाकी स्मॉल कर दीजिए @123. ईजी टू रिमेंबर दैट. सो दैट्स माई वे ऑफ डूइंग इट. सो अगेन दैट्स योर चॉइस whether you take it or not. Otherwise you can create your own password. All right, next below that we have the security pin. I have selected the security pin. I will click on save and proceed. I will click on it. It will send me the OTP on my registered mobile number. I will check that OTP there and I will punch in that OTP number and I will click on verify OTP. Once I do that, it will give me this option. I will click on proceed to complete application form. Once I do that, I will be getting the username on my phone number. I will have to punch in the same application number which is given on my phone number sent by the MHCET. Password which I have already created, I will have to mention that and I will click on sign in. Once I click on sign in, these are the information which will come. First, registration details which I have completed. All this information needs to be done and then I'll be able to go ahead. So I will click on this particular part and it will take me to second information. So this is the reservation options. As I've already informed you कि reservation options है type A, B, C, D, E. अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हैं, उन पर्टिकुलर A, B, C, D कैटेगरी में से फॉल करते हैं, so please choose all these options. अगर आप महाराष्ट्र से नहीं हैं and जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट नहीं है, तो योर ऑप्शन विल बी OMS. द फुल फॉर्म इज आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट. ओके, सो एक आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट का ऑप्शन है एंड देन यू ऑल्सो हैव J&K माइग्रेंट ऑप्शंस. सो नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव पर्सन विद डिसेबिलिटी, येस और नो, यू कैन चूज दैट ऑप्शन. एंड बिलो दैट यू हैव एन ऑप्शन कॉल्ड एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन. सो आप यहाँ पर HSC सिलेक्ट करेंगे एलिजिबिलिटी qualifications के अंदर HSC which is 12th standard. All right, once I do that, I will click on save and proceed. It will take me to this particular page. I will click on save and next. So once I do that, I will punch in the information for 10th standard Uttar Pradesh. I have selected board state. You have to select. You'll have to select the board name. The board name what was not mentioned ICSE, so I have selected other here and I have selected mentioned specifically ICSE here. मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपके जितने भी टोटल मार्क्स आए हैं आप उसको कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखिए. आउट ऑफ द टोटल मार्क्स यू हैड एंड percentage, it will automatically calculate. You don't have to punch in the percentage there. Seat number is the roll number. Okay, 10th का आपका जो रोल नंबर है आप वो मेंशन करेंगे. क्लास फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन क्या है आप उसको मेंशन कीजिए एंड पासिंग ईयर कौन सा था. सो सपोजिंगली अगर आपने 10th कंप्लीट किया था 2020 में, सो आप 2020 में जाकर आप उसको 20 अगर आप SSC करें 12th की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप 12th की इन्फॉर्मेशन 2022 में करेंगे. So whenever you have passed that particular year, you will select that particular information and you will click on save. Once you do it, it will take you to next
page. Now there are three options कि आपको अपना entrance exam कहाँ पर आप देना चाहते हैं. So there are three preferences 1, 2 and 3. You can choose your desired location where you want to give the entrance test, and you will have to fill all these three options. आप ऐसा नहीं है कि आपने एक location select किया and you can leave those other or 2 options. You cannot. Okay, आपको तीनों options को fill करना है. Whenever you have these options, I always recommend my students कि आप अपने नियर बाय लोकेशंस को ही सिलेक्ट कीजिए. जो भी आपके नियर बाय लोकेशंस हैं आपके स्टेट और सिटी, आप उस लोकेशन को ही सिलेक्ट कीजिए. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं हो कि आप थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाएं. तो आप प्रेफरेंसेस लोकेशन यही दीजिए जो आपका है, एंड क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड. Once you do that, you will have to attach the passport size photograph and the signature too. So passport size photograph and signature मैंने dummy already attach कर दिया है. And if in case you face problem in attaching the photograph and signature, बहुत easy होता है. अगर आप photograph अगर आपका अटैच नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, मे बी हो सकता है वो साइज़ उसके हिसाब से वैलिडेट नहीं हो रहा. ऑल्दो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर साइज़ नहीं है, बट यूनिवर्सिटीज़ नॉर्मली मांगती हैं कि दिस शुड बी मिनिमम मैक्सिमम ऑफ 100 KB. सो अगर आप साइज़ को कंप्रेस करना चाहते हैं फोटोग्राफ के और सिग्नेचर के, go to Google, just type compress image. There will be a lot of softwares online which you can find and you can use it for compressing the photograph. तो वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली कंप्रेस कर देगा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, एंड उन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का आप यूज़ कर सकते हैं. गाइस, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आप पेंट पे जाकर भी आप फोटोग्राफ को कंप्रेस कर सकते हैं. यू हैव एन ऑप्शन कॉल्ड रीसाइज ऑप्शन इन पेंट सेक्शन. वहाँ पर जाके भी आप फोटोग्राफ को रीसाइज कर सकते हैं एंड कंप्रेस कर सकते हैं. Alright, so if I've already attached the photograph and signature, and I will click on save and proceed. Once I do that, it will ask me the Aadhaar card. So I will have to attach the Aadhaar card. Here I have already attached it. I will click on save and proceed. Once I do that, it will give me the preview of all the information which I have filled. Please go ahead and check all the information which you have filled, because later on once you make the payment, it is very very difficult to make the changes later on. आप वाली सारी information को please cross check कीजिए and then proceed for it. Okay, so I have checked all the information. I will click on proceed for payment, and it will give me this option. I have chosen the general category here, so 800 option is there. I will click on this option and I will click on proceed to payments. So once I click on proceed to payment, it will take me to payment gateways, जहाँ पर आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, all the options are available. So जो नॉर्मली जो हर जगह चाहिए होते हैं वो सारे options ऑनलाइन पेमेंट मोड्स अवेलेबल हैं. So आपका डिज़ायर पेमेंट गेटवे आप चूज़ कीजिए, मोड चूज़ कीजिए, एंड यू कैन मेक द पेमेंट फॉर MHCET. गाइस, आपका यूज़र नेम पासवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आप उसको कहीं ना कहीं सेव करके रखिए, बिकॉज अगर आपका यूजर नेम पासवर्ड खो गया तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट दैट अगैन, फॉरगेट पासवर्ड करना एंड कॉन्टैक्टिंग द यूनिवर्सिटी अगैन. फॉर प्रथम स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिया, दैट्स समथिंग कॉल्ड फॉर्म्स वॉलेट इन योर प्रथम अकाउंट. फॉर्म्स वॉलेट के अंदर जाकर आप अपने सारे यूजर नेम पासवर्ड को सेव कर सकते हैं फॉर ईच यूनिवर्सिटी एंड कैंपस, ताकि आप जब भी आपको यूज़ हो उस पर्टिकुलर यूजर नेम पासवर्ड का, आप उसको यूटिलाइज कर सकें. Alright, so still in case you face any kind of problem, already हम फॉर्म को फिल कर चुके हैं. अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिलिंग के टाइम पर, आप हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन द फोन नंबर्स गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. इफ़ यू वांट टू ज्वाइन प्रथम, अगर आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं किया है, द फोन नंबर इज गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर दैट टू. वी विल डू द काउंसलिंग पार्ट एंड विल help you in preparing you for the entrance test too. We'll be soon creating the video for other universities, like abhi Delhi University is yet to release their application forms, and St. Xavier's yet to release the application form, and there are few more universities will be releasing the application form. I'll be creating the video for that too. Till that time, take care, stay safe, and work hard for your pre-boards and board examinations. Thank you and have a nice day.